दोनों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्या? प्रोस्थेसिस। एक तरह से प्रोस्थेसिस चलो अपार्टमेंट को एंगुलेटेड डेवलपमेंट कर ली, एक तरह से फ्लैटनिंग कर ली, व्हाटएवर दैट वी कैन मैनेज, बट लॉन्ग टर्म और नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म ही प्रॉब्लम आ जाएगी. Bone loss will start in that area because of the constant impingement or food infection and compression. So standardization is the distance is around 1.5 and all around, and between the two implants, 3, as the number of implants they keep on increasing. So the distance, you have to follow that distance. More distance doesn't make a problem, but less, yes, does make a problem. Right? And in this case, we have already discussed what about this area. Either you, एक और प्रॉब्लम है क्लिनिकली किस एरिया में, जो लगने के बाद आएगी, वो क्या लगने के बाद आएगी, यहाँ see this dip, दांत लग गए, there will be a punch here, and then there will be a sudden dip, food infection, food वहाँ फंसा रहेगा, तो patient will keep on doing this, or you know. So to avoid this area, try and go straight. उसको straight करना है, नहीं तो आपका प्रोस्थेसिस भी वैसा बनेगा, फूड लॉजमेंट होगी वहाँ below the crown. Any food development below the crown will again not immediately, but short term to long term effect will be on the soft tissue. Soft tissues, they always follow bone. Wherever the bone is there, soft tissue will be there. If the bone is high, soft tissue will be high. The bone is less, soft tissue is less. That is why. So you have to create a bone here. Now how to create a bone? Whether I told you, either you lift the flap, place the graft, and place the implant. Then you can, do this procedure of grafting at later stage also, not at the same time. Lifting a flap at the same time is always beneficial when you are at the time of placing the implant. But what if you have not placed, you have placed the implants, or you can only do grafting, then later on place the implants, or you can place the implants, later on do the grafting at the time of, even after the placement of the crown also. Then also you can do the, again there is an advantage of that. You know where the crown is there, how much thickness you want to give, at that time also you can do it. So these are all things, but ideally 1.5, 3, all around 1.5, so that the forces are absorbed by the bone. So thick bone, more force will be absorbed, minimum amount of recession, minimum amount of effect on the gingiva. Atraumatic extraction. Why atraumatic? We are talking about only implantology. We want to place the implant simultaneous or later on. So why we want to atraumatic extraction technique? Not because there is less pain, less trauma, less healing, this and that, everything. Because implant, the life of the implant is the bone. Right? So more bone, longer the implant will live. More oxygen, longer we will live. Carbon dioxide, right? So वही चीज है. So atraumatic extraction, we want to save as much bone as possible from whichever area, and mostly those who have experienced the extractions in the Department of Oral Surgery, mostly the bone which comes off with the tooth is the buccal bone. Either you are talking about maxilla or the mandible, right? See, it is not a crime to take out the bone along the tooth. Sometimes this most probably happens, what I have seen, this most probably happens in the tooth which are endodontically treated. When you are trying to remove the tooth,
One, the tooth breaks because already there is an excess cavity, whatever. So, second, somehow or the other, the buccal bone, it really comes out with it. So everything is ready, you want to place the implant. And then suddenly we are removing one, two or multiple teeth or whatever. Suddenly you face that buccal bone has come out. Let's say only one tooth. Number one. This also happens if you have not when you are extracting, mostly you are not reflecting the flap. You do the extraction like that, right? But when you are at your level, you are raising the flap and then you remove. And not in your level, but sometimes I also do because I know that this tooth is going to give me a problem. What kind of problem? The bone is lost. So what is the bone for implant? Bone is the oxygen. More bone, implant will stay for a longer time. So even if you have lost it, create bone. Either simultaneously, one important point. Simultaneously. Another important point of simultaneously doing grafting is primary stability. You have to have the primary stability of the implant. If you are unable to get that primary stability, don't place the implant, only place the graft. Because graft will only succeed if the things are stable, fixed. If they are moving, anything is moving, graft will not go away. Right? So that is why that is the Melcher's theory. Melcher's theory is stability is very important. Of what? Stability of graft. Stability. How will it be stable? That is why we try to cover it with the membrane. Whether it is resorbable or non-resorbable, that's a different thing. So stability, very important. It should sag. The area should not sag in. Graft डाल दिया ऊपर से आपने सूचो देख टाइट कर दिया. Graft डालना तो वहाँ ले गया. So everything is just sagged in. वो नहीं होना चाहिए. So atraumatic extraction technique. Atraumatic, why? We want more bone. Do whatever you want. Even if the bone comes out with the tooth, right? You remove it with the scalpel so that it will act as a autogenous graft. Then mix with some other or whatever. Sometimes if the bone a bigger chunk of bone has come out, then remove with the scalpel and try to fix it wherever it has come. From wherever it has come, the other side, we try to fix it there, right? So atraumatic extraction technique. Atraumatic extraction is a dental technique focused on removing teeth with minimal damage to soft and hard tissues. This approach prioritizes preserving the alveolar ridge, the bone surrounding the tooth, and adjacent soft tissues, which is crucial for successful placement of dental implant. Minimizing soft tissue reflection and severing connective tissue fibers. Now, atraumatic. आपको हमेशा ये जो minimizing the soft tissue reflection. If you know that this area is going to be a problem, reflect. For example, you can do the flap less implant placement also, but because of some reason you can see, you can feel your inner instinct that this area is going to give me some problem, or maybe sometimes what happens is the thickness of the bone, it is not as thick as it seems to be clinically. Sometimes the flap is thick and you reflect, oh come on, there is sharp edged bones. This thing especially happens in the maxilla. Beautiful ridge, crestal incision, reflection, there is a ditch. Bone is very thin. Then another theory, how to increase the thickness, but atraumatic extraction technique, minimizing the soft tissue reflection. You know why? Because the periosteum holds the bone, right? That is why minimizing the soft tissue reflection. But if it is the tooth is root stumps are present, or endodontically treated tooth is there, damaged tooth is there, the forceps are not holding
the tooth, then reflect. Severing connective tissue fibers. Carefully cutting the connective tissue fibers surrounding the tooth allows for more control and less, because you are severing that attachment. What is that attachment? How much is that attachment? It is around 1.5 to 2 mm, right? So you sever, go till the bone, you feel the bone with any instrument, sever it, and then with a forceps try and hold it. Reducing contact areas, minimizing contact with the adjacent teeth and socket walls during tooth removal reduces the risk of fracturing the tooth or damaging the surrounding bone. You know, if the tooth is damaged, you still can remove without damaging the surrounding bone. Our point is, our main goal is minimizing the damage to the bone. Why? Again, bone is the house of the implant. Don't damage the house. Don't damage the wall. If 1, 2, 3 walls are damaged, try to create it. Right? We are using specialized instruments. Very important. Instruments like periotomes and forceps are designed to apply controlled force and leverage, allowing for atraumatic tooth elevation and removal. You know what happens with the forceps you are removing? That socket, the bone yields to that pressure. The socket really sometimes opens up more than desired, or if you do something, tooth remove कर दिया, then try and just place it in safe socket. आपको लगेगा socket size बड़ा हो गया, especially from the upper side. This is because of this. The forceps without periodontal you are trying to remove, and then then everything is, then आप pressure डालते हो ऊपर से उसको बंद कर थोड़ा सा close कर दो. So using specialized instruments, point is atraumatic extraction. जो भी चीज जिस चीज के लिए बनी है ना, use that for that purpose only. ये नहीं जो अच्छा कुछ है जी चीज पेरियोस केवल एलिवेटर के साथ ही लगी, या पेरियोटोम नहीं है, चलो कोई नहीं है, वो ऐसे करो प्रोब की जूंजी के साथ ही उसको लगे रहो. Use same instrument for same area. Otherwise, you are damage. आप सोच रहे हो कि damage होना है. If you are prepared for the damage, you are prepared for the repair of the damage. It's okay. Principles of atraumatic extraction: maintaining blood supply. Basic principles. जितनी ब्लड सप्लाई रहेगी, जितना उसको ट्रॉमा मिनिमम होगा, ब्लड सप्लाई भी मिनिमम होगा. जितना ट्रॉमा टिश्यू को ज्यादा करो, टिश्यू मींस सॉफ्ट एंड हार्ड बोथ, जितना उसको ज्यादा करोगे उसकी डिले उतनी ज्यादा हो जाएगी, उसकी हीलिंग उतनी डिलेड होगी. कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर आपने इम्प्लांट डाल दीजिए, मुझे पता ही लगा कुछ मेरे हुए नहीं, करा नेक्स्ट डे बुलाओ, एवरीथिंग इज फाइन, ब्यूटीफुली हील्ड एरिया, minimum trauma to the area at the time of implant placement. That is why जो सर्जिकल किट्स हैं उन्होंने एक ही ड्रिलिंग नहीं दे दी, सब कुछ करी जाओ उसी. There are systematic things. If you follow that system, minimum. बाहर आप कॉलेज से निकल के जाते हो ना, है ना, रास्ते में कोई चौक आते हैं लाइटों वाले, तो जब लाइट नहीं होती ना, देन सी द कियोस, वहां कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ज्यादा जाम लग जाता है ना. सो देयर इज अ सिस्टम फॉर गोइंग लेफ्ट राइट व्हाटएवर, रेड लाइट पे रुकना, ग्रीन पे जाना, ऐसे ही सिस्टम यहाँ है. इंस्ट्रूमेंट्स किट बनी हुई, ये इंस्ट्रूमेंट लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ऐसे सिस्टमैटिकली यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग. मिनिमम ट्रॉमा, रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी गुड. इट हैज टू बी गुड एंड नथिंग शॉर्ट ऑफ गुड. अगर आप जंप करोगे, जंप द रेड लाइन, कुछ ना कुछ चांसेस है होने के. कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पुलिस ही पकड़ ले आपको चलान हो जाए, नहीं, जरूरी नहीं है, पर चांसेस हैं. आजकल तो हो गया ना, वो एक तरह से आगे दूसरी चौक पर पकड़ लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ऐसे एक दो बार बच जाओगे आप, पर कुछ ना कुछ होगा. Implants will fail, patient will complain, whatever. So principles of atraumatic extraction: maintaining the blood supply, minimum trauma to the bone, minimum trauma to the soft tissue,
the result will be minimum trauma to yourself. So, techniques in atraumatic extraction, periotome, severing of the ligament. Basically, हमने उसको removal easy करनी है without damaging the bone and the soft tissue. Periotomes are thin, sharp instruments used to cut the periodontal ligament, allowing for controlled tooth elevation. ये जो पेरिटोम है ना, ये हमने सिर्फ फिजिकली यूज करना है, सीवियरिंग ऑफ द लिगामेंट। ये नहीं कि पेरिटोम डाला बाहर आ तो जाएगा, ठीक है। अगेन डैमेज टू द टूथ, डैमेज टू द बोन, डैमेज टू द इंस्ट्रूमेंट। ये तो है नहीं डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है एक बार एक दांत निकाल कर रख दिया। सो जो इंस्ट्रूमेंट बना उससे वही काम लेके जस्ट लीव द इंस्ट्रूमेंट पे नहीं किया था, बिकॉज आवर पॉइंट इज व्हाट वी आर थिंकिंग। वी आर थिंकिंग एट्रोमेटिक, वी आर थिंकिंग सॉफ्ट टिश्यू शुड हील परफेक्टली, सो बोन शुड हील परफेक्टली। सो जैसे इम्प्लांट शुड बी प्लेस्ड ब्यूटिफुली। सो ये सारी चीजें तभी होंगी जब फ्रॉम इवैल्यूएशन टू द प्लेसमेंट सिस्टम को फॉलो करना है। जहां गड़बड़ हुई इट इज गोइंग टू रीपे यू, माइंड यू दिस। कभी ना सोचो क्या हो गया, कुछ ना कुछ जरूर होगा। देन वो अभी नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। देन करना आपको ठीक पड़ेगा। जब आपने सोच ही नहीं है कि ठीक बाद में करना, तो पहले क्यों आराम से कर लो ना फिर काम। सो टेक्निक्स इन एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन, पेरियोटोम टेक्निक। सेकंड इज फोर्सेप्स, यू नो, elevation, then forceps use, extraction। वो आपको पता ही है कि कहाँ कौन सा फोर्स लगाना है, कैसे बर्कन फोर्स, लिंगुअल फोर्स, पैलेटल फोर्स, व्हाटएवर। So these forceps use leverage and controlled force to loosen and elevate the tooth without excessive pressure on the surrounding bone. जितना एलिवेशन बेटर होगी ना, उतना ट्रॉमा कम है। Minimum use of forceps is also an indication for atraumatic extraction. जोर लगा रहे हैं जी पूरा, जोर नहीं लगा। जहां जोर लग रहा है ना, वहां इसका मतलब ठीक नहीं लग रहा था। मिनिमम जोर किसी भी चीज में, पता लगे एक्सट्रैक्शन करनी है, पेशेंट लेटा हो, आप खड़े हो, बॉडी का जोर पड़ना भी पूरा ना। इसका मतलब आप तुझको, पेशेंट को, एरिया को, हमारा टॉपिक है, व्हाट्स टुडेज टॉपिक? टॉपिक इज इम्प्लांटोलॉजी। हमने इम्प्लांट डाला ना, हमने वो निकाल के, हमारा पर्पस उसको निकाल के पेशेंट को स्टिच करके भेजना नहीं। आवर पॉइंट इज वी प्रिपेयर द पेशेंट, everything is done. Even if the tooth is there, we have to remove tooth or teeth, whatever, remove, see whether the bone is damaged, especially from the buccal side. Now how to see that? Extraction हो गई, या तो उसको clean करके देखो। The best way is use, let's say, periodontal probe or any other instrument, move it into the socket and see whether you can feel the bone from all around, and the बोन जो है वो आपस में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहा। देयर इज अ स्मूथ मूवमेंट ऑफ द बोन फ्रॉम एंड टू द सर्वाइकल एरिया। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ मच बिलो द गम लाइन यू नीड टू प्लेस योर इम्प्लांट। हमने निकाल दिया, इम्प्लांट डाल दिया, सपोज वो ऊपर ही रह गया 3 mm, थोड़ी बोन भी डैमेज थी। सो यू हैव टू असेस ऑल दोस एरियाज विजुअली and by means of palpation. That is why these are all steps for successful placement of implant and the successful or minimizing the failure of implant. Techniques in atraumatic extraction. Then piezoelectric instrument. डॉक्टर अमित, ये है piezoelectric instrument? है। सो आपने देखा ही होगा
उसकी वर्किंग क्या होता है, कितने एंट्रीज है, कैसी टिप्स है, पर्पस क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इसका फंडा और स्केलर का फंडा सेम ही है, वाइब्रेशन। ठीक है, ये वाइब्रेशन मोड पर बोन को करते हैं, दैट इज जैसे स्केलिंग करते हैं उसकी एक वाइब्रेशन है, इसकी भी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी इसकी हायर फ्रीक्वेंसी है उसकी, दैट इज वाई। बट थोड़ा टाइम लगता है इसमें करने में। Blade, other instruments, they take lesser time. This takes slightly more time, and this is good for if you are doing bone blocks. यहाँ पे मतलब trauma कम है ना patient का. But anyway, techniques in atraumatic extraction. One is the periotome. Then we discussed about the forceps. Then the piezoelectric instruments. Another point. Endoscopically assessed root splitting. The root splitting, you have to take out the tooth. Suppose if it is not coming out, there are different instruments which go into the canal, and then you apply the split, and then you take one by one, applying again the periodome technique or whatever methods you can. Power tone, periotome, piezo, and power. What is a power tone? Power tone is a periotome attached to a mechanical device. So this is a periotome hand instrument. The tip, if you attach to some machine, it becomes a power tone. For example, like this. Instead of giving hand pressure, that machine will try and it will keep on severing the periodontal ligament. So these are the different methods of atraumatically extracting the tooth. Side development. Even when you are atraumatically extracting, you are doing the side development. ट्रॉमा ही नहीं हुआ, बोन आपको चाहिए थी, मिल गई, मतलब ये साइड डेवलपमेंट with a lot of damage to the bone, whether because of the periodontitis or because of the past extraction, bone is lost, this and that, whatever there, or there is because of non-replacement of teeth, there is a lot of bone loss, especially in the mandibular area, posterior, atrophic maxilla, anterior or posterior. Then you are vertically or horizontally developing the bone. Now mind you this vertical augmentation, horizontal augmentation, they are going to take a lot of time. Not the procedural time, but after the procedure, the time to get the bone out of it. They are, you have to be patient, the patient has to be patient. ये नहीं कि आज किया कल लगा दूं, कुछ नहीं होना. So there are maybe 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, depending on the area, depending on what, right? So different clinical situations में time कौन सा कितना ज़्यादा लगेगा वो between you and the patient. So side development की बात हो रही है. अगर atraumatic ही निकाला हमने तो side development होगी. But this side development what you are seeing on the screen is not that what I'm talking about. जो अभी बताया कि खड्डे हैं जी, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो साइनस लिफ्ट करना है, साइड डेवलपमेंट, साइनस, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस है. सो atraumatic extraction point is want to save the soft tissue, want to save the hard tissue. That is why atraumatic extraction is very, very important if you want to place it simultaneously. Even if you don't want to place it simultaneously, more bone, more sizes of the implants, better prognosis. So, site development. Importance of site development. Improved implant stability. Obviously. कुर्सी है 1.5 फुट चौड़ी, 6 इंच चौड़ी कुर्सी पे आप बैठ सकोगे नहीं, स्टेबिलिटी नहीं ना आपकी. आप यहाँ तो गिर जाओगे,
या उठ के कहीं चले जाओ, you are not comfortable. Similarly, sight development, backbone, required amount of this thing. Why? Because we know implant कोई 1 millimeter का तो है नहीं ना diameter. We know the sizes are, let's say, from in GMI the sizes are 3.3, 3.75, 4.25, 4.75, 5.75. We know the standard sizes of this. अब bone है वहाँ 2 mm. Sight development horizontally, vertically, because we know, we remember the diagram. Which diagram? 1.5, 3, 7, whatever. So वो चीज़ हमें पता है कि इतनी bone चाहिए. So we want to develop that sight. For what? For the improved implant stability. Adequate bone volume and quality are crucial for ensuring initial implant stability and long-term osseointegration. Now these two key words are very important. What? One, implant stability and long-term osseo. Implant will be stable. ये पक्का चल रहा है कि बंद है? इसको तेज नहीं होता है, तेज कर दो, कर दिए नहीं, तेज कर दो. अच्छा, मैं देख रहा था इधर को पक्का नहीं. So, sight development, what is the importance? We need to have the more stability, whether it is primary, whether it is secondary. So, primary and secondary stability. Primary stability is the time of placement of the implant. Implant डाल रहे हैं either rotary method or by hand torque से. Very good. Torque आ गया. Torque 30, 35, 40, 45, 60, 80, whatever. आगे, that is primary stability at the time of placement. Secondary stability is over a period of time, if there is no movement. Right? That over a period of time is whatever the time slot, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. That implant has to be stable. When it will be stable? When it is right, everything is in the bone. Everything is in the bone. This is what? A bottle, खाली बोतल. Suppose आपको नहीं दिख रही, because bottle is in the bone. अगर ये ऐसे करी रहेगी, outside the bone, so you have to develop the side. Whatever the method for primary stability तो ले लिया आपने. Secondary stability के लिए. Primary stability तो आ गई जो residual bone सी, डाल दिया आपने. Considering all the factors, ये नहीं कि बिल्कुल टेढ़ा डाल दिया फिर बाद में देख लेंगे. फिर prosthetic के टाइम फिर छोड़ो. So primary stability आपने ये चीज कर ली. For secondary stability and long term, long term osseointegration, you have to be, that portion of the implant has to be inside the bone. Create the bone. So topic is sight development in oral implantology. Adequate bone volume and quality are crucial. Now how do you, वो volume तो बन जाएगा, quality कैसे बनेगी? How do you create the quality of the bone? Quality either by means of autogenous bone grafts or autogenous bone, or by means of using grafts of standardized good grafts. For example, xenograft or mixed of different grafts. Sometimes, let's face this and let's be very frank. Sometimes the patient doesn't, need to pay or doesn't have the ability to pay. Sometimes you mix different ethnograph, maybe autogenous, maybe alloplastic, maybe xenograft. Sometimes everything is mixed up and then so the volume and the quality. Quality is very important for long-term stability of the bone. That is why I always choose the good graft considering certain factors from the patient point of view and from your own point of view. Then enhanced aesthetics. For example, you remember that X-ray, the photographs of the anterior tooth, right? Suppose there is a lot of bone loss there. How will you place that prosthesis? Will it be very long? Then aesthetics is gone. Even if कई बार पेशेंट को ना
पेशेंट बैठा होता है, अभी किया कुछ नहीं हमने, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द क्लिनिकल इवैल्यूएशन। क्लिनिकल इवैल्यूएशन, पेशेंट को बैठा स्माइल करके दिखाओ, चाहे वो इडेंचुलस है, चाहे वो पेशेंट ये नहीं, पेशेंट वहां बैठा आप यहाँ खड़े, स्माइल करके दिखाओ जी, ये पेशेंट को पुल डाउन उसके लेवल पर, यू वांट टू सी व्हाट यू वांट टू सी, करो जी स्माइल, लो हाई व्हाट आर द थिंग्स यू आर। मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ अपने क्लिनिकल देखनी, हमने स्माइल लो है, लिप लाइन लो मीडियम हाई, वो प्रॉब्लम हमने अगर लो भी है हमने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि ऐसे वो ऊपर जा रही है, कोई नहीं लगा देंगे पोर्सिलिन पिंक, काम चल जाएगा, चल तो जाएगा नहीं, काम तो चल रही है, पिंक पोर्सिलिन लगा दो ठीक है, बट कई बार हमें लगाना भी पड़ता है, बट डोंट ट्राई टू हर केस में नहीं लगाना हमने कि पिंक ही लगाना, फिर हाउ मच, फिर अगर हमने वही लगाना है तो दिस मींस यू आर नॉट इंप्रूविंग योर केसेस, सो दिस मींस मतलब आपके हाथों में स्किल नहीं आ रहा, यू आर नॉट ट्राइंग टू इंप्रूव, यू आर जस्ट कोई नहीं कर दो, वही जो मैंने एक और बात बोली थी, आप ये सोच के रखो कि आपके पेशेंट्स बाहर घूमेंगे, जाएंगे किसी और के पास भी, आपके पास नहीं रहना, हो सकता है वो आपके पास आया हो, उसका हस्बैंड या वो उसका कोई और उसकी वाइफ किसी और क्लिनिक में जाती हो, अच्छा जी मेरा देखना है मैंने किया था, ठीक है। सो साइट डेवलपमेंट, डोंट रश, कहा जी पेशेंट आ गया अभी कर दो, बिकॉज यू आर हेयर इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, यू आर हेयर टू लर्न, यू आर हेयर, यू कैन वेट फॉर दैट साइट डेवलपमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर नहीं होते, कोई नहीं, हमने आज साइट डेवलपमेंट की, साल 2 साल बाद आके देख लेंगे, ये नहीं कि once you are passed out you are gone forever. So enhanced aesthetics, if you want to compromise on aesthetics then mind you this, फिर over a period of time जैसे हम बात कर रहे हैं immediate short term long term implant stability osseointegration, then वही बात फिर आपके साथ भी होगी later on, यहाँ से नहीं कराना यार, ये पेशेंट ठीक नहीं, ये पेशेंट का काम ठीक नहीं होता, क्या काम ठीक नहीं होता, दांत तो लग गया, दांत लगाना काम नहीं ना है, वही बात, हमारा काम है एस्थेटिक्स को भी देना, सो वो आपको तभी आएगी जब आप ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रख के आप काम कर रहे हो। सो साइड डेवलपमेंट, एनहांस्ड एस्थेटिक्स, स्टेबिलिटी, एस्थेटिक्स, और एक और भी है जैसे मैंने अभी बोला, ये कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट आया कि आपने उसी टाइम ही एक्सट्रैक्शन करनी है, उसी टाइम ही साइट डेवलपमेंट करनी है, उसी टाइम ही इम्प्लांट डालना है, सब कुछ उसी टाइम कर देना, यस इफ यू आर कॉन्फिडेंट फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन लर्निंग स्टेज अगेन गो स्लो, स्टेप बाय स्टेप चलो, इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। So second point, side development, second is enhanced aesthetics, that स्माइल करके दिखाओ जी, लो मीडियम हाई लिप लाइन, एंटीरियर, पोस्टीरियर में भी, पोस्टीरियर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना लिप लाइन का, बट फर्क पड़ता है, वो पड़ता कहाँ है, सपोज आपने फुल माउथ केस करना, वो पड़ता ऐसे है कि हमें एक ऑक्लूजन भी कोई चीज होती है, मतलब हमें वो मेंटेन करनी है ना, पता लगे इनको एक तरफ से ऐसे एक तरफ टेढ़ी मेढ़ी ऑक्लूजन, उसका कोई फायदा नहीं, डोंट डू इट, डेंचर लगा दो, बट सीधा ये फ्लैट है नहीं, चलना आसान है, बैठना आसान है, ये ऐसे ऐसे होगी ना, कोई चलेगा ना बैठेगा, वही चीज पेशेंट को लॉन्ग टर्म, यू नो इम्प्लांट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इम्प्लांट में कुछ नहीं है कि यहाँ भी आज लगा दो, चलो 2 साल बाद निकाल के कुछ और कर लेंगे, तब तक हमें भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, तजुर्बा आ जाएगा, राइट। सो एनहांस्ड एस्थेटिक, इंटीरियर पोस्टीरियर, देन रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, वही आ गई ना बात जो मैंने अभी बताई। आजकल मोबाइल सबके पास है, कई बार ना हमें बड़ी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कई बार ना कोई छोटी छोटी सी चीजें दिखाते हैं, एक बंदा ओलंपिक्स में
4 ओलंपिक्स से खेल रहा है, पहले कुछ भी नहीं आता, धीरे 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 he or she is reaching towards the medal, gold, silver or whatever, bronze. 10-10, 20, 15 साल लग जाते हैं. Why? To achieve a medal for your country, to achieve a medal for you and for your parents. ऐसे ही टाइम लगता है. रश अप ना करो. ये 3 साल पीजी कर रहे हैं, इनको डेडिकेटेडली उसी चीज में लगे रहो. आपका भी पता नहीं ना, यहाँ करनी, कहीं करनी, जहां भी करनी है. सो रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को करने के लिए वो सारी चीजें ये इसी करके वी आर टॉकिंग. सीधे पीछे से क्यों नहीं हमने पढ़ने लग पड़े, थैंक यू से क्यों कर देते. ठीक है, वो इस करके टेक्स्ट बुक में भी जो 1 चैप्टर है ना, पेरियो नॉर्मल्स, नॉर्मल पेरिडोन्शियम, जिंजिवा, पहले उन्होंने एल्व्यूलर बोन का क्यों नहीं चैप्टर दिया, जिंजिवा को क्यों दे दिया? बिकॉज पहले हमें जिंजिवा ही नजर आता है, उसके बाद है सारी चीजें. उसके बाद हाँ एल्व्यूलर बोन भी हो सकता है, सीमेंटम भी हो सकता है, लिगामेंट भी हो सकता है. सब चीज पहले जिंजिवा, पहले उसको भी देख लो, बिकॉज वो चीज दिखेगी. आपको ये चीज दिख रही है ना, कारपेट लगा हुआ, और ना जी हमने, अगर यहाँ दीवार हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिकली इट विल नॉट बी प्लीजिंग. दैट इज व्हाई दे हैव कवर्ड इट लाइक दिस. दैट इज व्हाई गॉड हैज कवर्ड अप. पता लगे बोन ही बोन नजर आ रही है, आपको भी ये कैसा पेशेंट को बीमारी है पीछे, राइट? आप उसको नहीं कुछ करोगे ना, आपको एस्थेटिकली नहीं अच्छा लगेगा. सो दैट इज व्हाई चीजें सिस्टमैटिकली बनी है, चलना सिस्टमैटिकली है. रिस्क कॉम्प्लिकेशंस का रिड्यूस करना है अगर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे. किस चीज के लिए? टॉपिक इज इम्प्लांटोलॉजी, टॉपिक इज साइट डेवलपमेंट. हमने देख लिया, क्लिनिकली इवैल्यूएटेड, एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन कर दी. नाउ वी आर प्रोसेसिंग टुवर्ड्स दी साइट डेवलपमेंट. पेशेंट को जरूरी नहीं आपसे एक्सट्रैक्शन कराए, वो कहीं से कराकर भी तो आ सकता है. उसके बाद डैमेज हुआ हुआ उसको आपने ठीक करना है सारे प्रोसीजर से. So to reduce the risk of complications, you have to develop the site. Why? More bone, more implant life, and long-term osseointegration. Then site development in oral implantology, increased predictability. These are all things are related. जैसे relatives होते हैं, ये relatives हैं एक दूसरे की. एक चीज अच्छी होगी तो दूसरी अच्छी हो जाएगी, दूसरी अच्छी होगी तो तीसरी अच्छी हो जाएगी. अगर कोई भी चीज ठीक नहीं ना है, बस फिर तो खत्म है कहानी. एक आधी चीज भी थोड़ी चीजों में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ज्यादा में नहीं. सो इंक्रीज प्रिडिक्टेबिलिटी. साइट डेवलपमेंट टेक्निक्स एनहांस द प्रिडिक्टिविटी ऑफ इम्प्लांट सक्सेस बाय एड्रेसिंग पोटेंशियल बोन डेफिशिएंसीज एंड सॉफ्ट टिश्यू कंसर्न्स, राइट? There are several techniques available to enhance bone volume for implant placement. Bone grafting, guided bone regeneration, distraction osteogenesis. But primarily, जो implantology में, जो मेरा field, जो मैं करता हूँ routinely, and I'm very confident about that, is bone grafting, guided bone regeneration. Distraction osteogenesis, that's not my field, मैं करता ही. Site development in oral implantology, expansion of the residual ridge to prepare the atrophic maxilla or mandible for implant insertion and augmentation. The other name for this technique is ridge splitting, ridge expansion, osteotome technique, all those. Some of the other, जो ये mandible augmentation is comparatively easy than mandible maxillary augmentation. एक तो very frankly gravitational effect. जब हमें ग्राफ्टिंग रूफिंग करनी है ना, तो कई बार you
टिश्यू भी हमें लंबा चाहिए करना, पेरिकॉस्टियल इंसिशंस भी देनी है, फ्लैप भी इलॉन्गेट कर। ये नहीं कि आपने वर्टिकल ऑगमेंटेशन 8 mm करनी है और फ्लैप का आ नहीं रहा, खींच के अभी लगे हुए करने, कोई फायदा नहीं, बिकॉज एज द हीलिंग विल टेक प्लेस इट्स गोइंग टू श्रिंक डाउन, एवरीथिंग विल बी ओपनड अप। सो यू नीड टू इलॉन्गेट द फ्लैप एज वेल। नाउ इधर फ्लैप को इलॉन्गेट करना आपने, कि आपने वहां फ्री जिंजिवल ग्राफ्टिंग के साथ उसको इलॉन्गेट कवर करना है, व्हाटएवर, वो मतलब इट्स अ different topic for flap management of the flap and all those things. Side development, so expansion of the ridge. Either जैसे different methods, ridge expand कर दो, augment कर दो। ये आपने ridge expansion जो पैरियो वाले बैठे हैं, उन्होंने ridge expansion या ridge splitting वगैरह अभी देखी है, मतलब होता आपने देखा कैसे करते हैं? मतलब there are, you create a groove and then मतलब you have to go slow by slow so that वो D1, D2, D3, D4 ये आ गए फोटो। किस में ridge splitting करनी है? D1 में, 2 में, 3 में के 4 में? D1 में कोई फायदा नहीं, only because you need trabecular bone। अगर हम सारी कॉर्टिकल बोन ही है, हम उसको स्प्लिट करेंगे ना, वो नीचे तक टक टूट जाएगी, बिकॉज उसमें कोई यील्डिंग के लिए कोई चीज नहीं ना है, यील्ड नहीं करेगी, वो टूटेगी। इस करके ट्रबैकुलर बोन है 2 and 3, D2, D3, दे आर द बेस्ट बोन्स फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट। वो एक बार दिखता कैसे, एक तो ही आपको दिखाया कट सेक्शन D1, D2, ट्रबैकुलर पैटर्न, जिसमें ज्यादा उसमें bones implant will be better stable than the one which is in D1. So split किया D2 and again D3, उस थोड़ा trabecular pattern कम हो जाएगा because your things are narrow. You need to widen it up. So make a groove. Place there's a kit for expansion. So you go by that method, and if you follow a method, it is not going to fail. If you do not follow any method or apply shortcuts, mind you this, you are landing in trouble. होना ही होना है, दो मर्जी कर लो, उस टाइम हो जाए, किसी भी स्टेज में हो जाए, at the time of delivery, even post delivery, patient is going to come back to you immediately, as soon as possible. ठक आना ही आना उसने। हम आंखें नहीं बंद करनी हमने कि होगा चलो ठीक है। Site development, the choice of treatment, again there are different methods of site development. Maybe vertical augmentation, maybe horizontal augmentation, maybe bone blocks, maybe आजकल एलोप्लास्टिक मटेरियल के भी ब्लॉक्स आते हैं, वो maybe sinus lift, lateral window, crestal approach, maybe densa method of lifting the sinus, or maybe ridge splitting, different methods. So the choice, it depends on two things. One, including clinicians training and preference. Number one point, the choice of treatment depends on numerous variables. Number one variable is clinicians training and preference. There are 10 methods. Maybe you are very good in 2 or 3. You are very confident कि yes ऐसे हो जाएगा. Concentrate on that. Don't use एक ना पैरियो में heroic attempts नहीं करनी हमने. Heroic attempts करो, कहाँ करो, जहाँ मतलब if you are not confident on a approach, don't do that approach. If you are confident in this approach, use this. Why? Because the result, what are we doing? Site development. आपको पता है इससे भी हो जाएगी. Do it with, of course, minimum trauma to the patient. So the variable is number one, clinicians training and preference. Number two, anatomic region. कहाँ कौन से एरिया में कर रही है हम. Degree of atrophy, arch relationships, prosthetic goals, aesthetic demands, economics and healing time requirements.
healing time requirements. Patient ready to wait, play with the patient. Only play if you are very good in playing the game. You know this is going to be like this. This is not going to affect or damage, then play. Otherwise, if you're not confident, don't do it. Side development in dental implantology are the procedures used to prepare the maxilla and or the mandible and surrounding tissues for dental implant placement, ensuring adequate bone quality and bone quantity for successful osseointegration. Often involves addressing deficiencies in the hard and soft tissues. You know what? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यदि यहाँ कोई डिफेक्ट है भी कि नहीं, वो पहले आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई होगा पेशेंट देखने से, नंबर 1। सेकंड, जो आपके गाइड्स हैं, मेंटर्स यहाँ लोकल, उनके साथ खड़े होने से, खड़े रहो, बिकॉज हम अंदर जाते हैं, जब भी कोई जाता है, हम कहीं ज्यादा जाते हैं, कहीं कम जाते हैं, मेरे जैसा कभी कभी जाते हैं, ठीक है। सो हम जब किसी चीज के लिए भी जाते हैं ना, वो हमेशा हमें मिल जाती है। हम खड़े रहेंगे ना अपने मेंटर्स के पास, टीचर्स के पास, दे विल ऑलवेज गाइड यू। शुरू में वही बात, शुरू में हमें लगेगा हमें तो गाइड ही नहीं कुछ हो रहा यार। खड़ना भी एक एक्सपीरियंस है, देख तो रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं है उन्होंने बुला के आपको हाथ ही पकड़ के कराना, नहीं, करते हुए भी तो देखना एक्सपीरियंस है। उनके एक्सपीरियंस को सुनना है तो एक्सपीरियंस। पॉइंट इज इन्वॉल्व एड्रेसिंग डेफिशिएंसीज इन हार्ट। पता तो लगे कि डेफिशिएंसी है, वो तब पता लगेगी जब नंबर ऑफ पेशेंट देखी जाओगे, एक ही तरह के पेशेंट देखो, देखी जाओ क्लिनिकली एंड रेडियोग्राफिकली, तब आपको पता लगेगा यार ऐसी ऐसी डेफिशिएंसी इस एरियाज में होती है। कॉमन टेक्निक्स इंक्लूडिंग बोन ग्राफ्टिंग, जीबीआर एंड ऑर्थोडोंटिक फोर्स्ड इरप्शन। आपने कभी ये, आई स्टिल रिमेंबर माय बॉस Dr. Gill in Amritsar when I was doing my PG. With this I am talking to you about 25 years and 27 years ago. Patient in उनके ना there was a 7, upper 7 था या lower 7 था, infra erupted pocket बनी हुई, कहती जी ये ऐसे करो, 8 भी था, erupted नहीं था, कहती इसको निकाल दो, when the 8 will come in that position it will bring the bone with it, पोजीशन शिफ्ट करवा के दे 4th ऑर्थोडोंटिक इरप्शन। कहने का मतलब ये है कि वो चीज जो मुझे 27-28 साल पहले मेरी टीचर ने जस्ट एक्सरे देख के बताई थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। क्या ये अच्छा ऐसे उस टाइम लगता है ये भी कोई चीज है, पता नहीं यार, नए होते ना एज इंटर्न एंड स्टूडेंट्स, हमें कुछ पता ही नहीं होता। सो यू नो आई स्टिल रिमेंबर दोज थिंग्स। Forced orthodontic forced eruption. Hard tissue site development techniques are bone grafting. We can use autogenous allografts and xenografts. Autogenous bone is the one which is taken from the own body, right? Now, how do you take it? Whether you want to use autogenous bone as a bone block or as granules or You want, जैसे वो एक्सट्रैक्शन की उनके साथ ही बोन लगी हुई है, आपने वो बीबी ब्लेड के साथ काट ली, देन यू नो उसको चूरा कर लिया और बाकियों के साथ मिक्स कर दिया। Autogenous, allografts and xenografts. Now what is the best bone? Obviously they say the best bone, the gold standard. The gold standard is the autogenous bone. And what is the next best? You know, 1, 2, 3 बच्चे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हैं सारी बेस्ट, पर फर्स्ट वाला ऑन द स्पॉट, यू नो, उस टाइम उसको ज्यादा आता था, इस करके वो फर्स्ट आ गई। जो सेकंड थर्ड आता उसको कम नहीं आता, बट वो उस टाइम उसको कम आया, रिफ्लेक्सेस उसके काम नहीं किए, नंबर कम आ गए, बात खत्म हो गई। बट कहने का मतलब वन इज गोल्ड स्टैंडर्ड इज द ऑटोजीनस, सेकंड इज
What I prefer is the xenograft. Xenograft, of course, it is very expensive than the alloplastic bones, but it is, why xenograft is good? Why? Because you place a xenograft, place autogenous, place alloplastic. 5 years down the line, 10 years down the line, 20 years down the line, उसका आपने histochemistry कराई उस bone की, then the particles, the bone is less resolved if you are talking about xenograft. If you are talking about allograft or alloplastic, they, some of the other, they have a life. Initially, they act as a very good scaffold. Dala oro, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. But over a period of years, that area slightly shrinks. The shrinkage is there, right? That is why they say autogenous is the gold standard. Second is the xenografts. They are xenografts. So xenograft from an animal source to augment the bone volume and to create suitable site for implant placement. Xenografts, I prefer using xenografts more in the maxillary sinus. Why? Because I want sinus में bone डाली, bone बन गई, implant हमने डाल दिए लंबे, so it should be there, it should stay there for 15 years. It should not resolve. एक पेशेंट में ये किया, एक पेशेंट में ये किया. Over 15 years of time, इसको देख लो, इसको देख लो. Then you compare, यार इसमें bone loss हुआ है, the shrinkage has come up, उसमें shrinkage नहीं हुई. Clinically, वो तो था ना कि histochemistry करो, histopathologically उसको देखो जी क्या problem है, क्या है, क्या नहीं. Red stain, blue stain, eosinophilic stain और भी जो होते हैं, right? Again, this is a good case. Now, see the side view. Trauma. Look at this. This is the flap which I have not reflected to give the blood supply to the area. See this bone very thin from the buccal side. Now again see the flap not reflected, level of the bone. Somehow one good point was, now the level of the bone on the natural tooth is here and here. Now this bone again, it's almost at the same level. Suppose because of trauma that goes back, then you have to increase the vertical height of the bone. Here the bone is, however, horizontally very thin. Now how do you place, whether you want to place the implant or not, then this is the implants have been placed. Now the level of the implant is almost at this level. If you place too low or too high, what will happen? The sulcus has to take its shape, or then the clinical crown height will be either less or more. This we don't want. Now the other, right? We want almost at this. Now again, this is a lateral incisor. This is what? This is again a lateral incisor. Somehow the other it is appearing big, right? So the level, the alloplastic material, don't compromise, don't मतलब कम डाल दो जी, हाँ हमारे पास इतना ही पड़ा है, इतना की डाल दो, कोई फायदा नहीं. That is why you need to keep checking your inventory. यार हमारे पास सामान पड़ा भी है, पेशेंट खोल लिया आपने, सामान है नहीं, फिर क्या करोगे? ओ यार सामान दे जा, उसको भी तो आने में टाइम लगेगा ना, पेशेंट खुला पड़ा, पहले ही सारी चीजें, all these things, ये सारी पेशेंट इवेल्युएशन, ये स्टेजिंग है कि आपने काम ऐसे करना है. ये आपको तभी फेलियर्स विल टीच सकते हैं. अगर आपके पास सामान नहीं है, दैट इज आल्सो फेलियर. फेलियर सिर्फ ये नहीं कि आपने इम्प्लांट लगा दिया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, ये सक्सेसफुल. ग्राफ्टिंग, सी
the level of grafting पूरा ऊपर तक भर दिया from the sides and from buccal side. Now, ऐसे cases में the question should come up whether we need to place a resorbable membrane or there is no need. You know, ideally, you should cover it with the resorbable membrane. Now that membrane, when should it resorb? There is a time for resorption. ये नहीं कि आज हमने लगाया और आपने कुछ सस्ती सी membrane लगा ली जो resorb हो जाए within 1 month. कोई फायदा नहीं. It should cover the area for at least 3 to 4 months. Over a period of 3 months to 4 months, it should resolve, so that जो हमने grafting job से भी material के साथ की है ना, it should be there without the ingress of the epithelial cells. उसको वहाँ ऐसे cover रहे हो. Maybe you need to stabilize that membrane with stabilizing pins, or you don't need to stabilize it. It all depends on the area, the length of the flap, whether it will be stable. It will just sag into that area. That is why if you fill less of the graft, there is a membrane, there is a suturing, you have to tie it up. It will just sag down into that area. कोई फायदा नहीं. अगर आपका ग्राफ अपनी जगह से हिल गया because of any reason, डाला तो हमने यहाँ है, पहुंच गया वो किनाइन की तरफ, this means उसको हमने proper stable नहीं किया उस एरिया को. Now this is another beautiful case. From the front side, again ट्रॉमा हुआ पेशेंट के बीच में एक दो दांत निकलते गए, फिर वो वर्स हो गया, फिर उसका कटता गया. चलो in the end, this X-ray is around 4 years back. ये 4 साल पुराना है. So placement of implants and see this membrane. The things have been covered by expensive membrane. This is not cheap membrane. So why we want to cover it? So that it should stay there till the time the graft is converted into a bone. I'll show you in the X-ray. Now this is the healing abutment. This is the X-ray of the same patient. See on the buccal side, this thick bone, and on the palatal side, you can differentiate with the contrast of the bone graft and the natural bone. Another X-ray. Crowns have been given. So point is that size development. Interior is very important, is also difficult sometimes. You know what? There is a word, augmentative relining. Now what is that? Augment करना है और reline करना है, repeated doing the same procedure where the graft is getting either resolved or we have वो उसका वो result नहीं आया जो हम चाह रहे थे. Doctors are also not confident about that कि यार ये पता नहीं कोई ऐसी टर्म भी है कि नहीं, हम दोबारा से क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ठीक नहीं हुआ. नहीं, ठीक नहीं. हम जो हमने अचीव करना था कई बार वो सिंगल सिटिंग में अचीव नहीं होता, हमें कई बार वो दोबारा से भी करना पड़ता है. मे बी वॉट एवर द रीजन. सो उसमें पेशेंट को समझाना और खुद को समझाना, पहले तो खुद को समझाना है इम्पोर्टेंट कि हमने ये काम यहाँ करना है. अब वो जो करना है मे बी एट द सेम टाइम और एट द टाइम ऑफ गिविंग द रेस्टोरेशन. It depends what kind of work you want to do. So this is 4 implants placed. This is the final radiograph. This is again, I would like to show you, this is the flap, right? So target your side development, stability of your graft, covering with the resorbable membrane, stability of the membrane. Now how to stabilize? Either use that stabilizing pins or screws, or
just go beneath the flaps. For going that or doing that, you need to have a slightly bigger membrane so that it really goes into the below the flaps. Now in this area, stabilizing from this side, going below the flaps,